Hey guys, how are you doing? Today in this video, we are going to talk about green hydrogen. And not only green hydrogen, you must ask this question, what is gray and blue hydrogen? Apart from these color codings, you must have heard what is black hydrogen or pink hydrogen, turquoise, yellow, white hydrogen, etc. etc. Right? We are also going to talk about National Green Hydrogen Mission, and if you have gone through previous year paper, you could be asked, can hydrogen be mixed with other fuels, for example, CNG, or can you use hydrogen in internal combustion engine directly, IC. So all these questions you are going to cover in this session, and let's begin with green hydrogen. So what is green hydrogen? Green hydrogen is hydrogen that is produced, let me tell you, let me find out my pen. It is produced using renewable energy such as solar energy and wind energy, for example. What you should underline, renewable energy. So if you understand this concept, so what is going to happen, this is called green because the production process, the production process is not going to emit carbon dioxide effectively, and that is why this term come green hydrogen. और इससे आपको पता लग गया होगा कि exactly what are other color coding means. Let's talk basic about hydrogen. Hydrogen is simplest and lightest, है ना. Periodic table में अगर आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन है H, है ना, हाइड्रोजन, इट इज द सिंपलेस्ट. ये क्या है, सबसे सिंपल क्या है, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट एलिमेंट. इट इज simplest element and it is found in H2 diatomic gas. It is naturally found in diatomic gas. और अगर मैं पूरा फ्रेश एक पेज ले लूं तो आपको मैं बेसिक फंडा बता ही देता हूं. तो हाइड्रोजन में क्या है, अगर आप हाइड्रोजन का बेसिक फंडा देखोगे, इवन यू कुड यूज बेसिक केमिस्ट्री, like for example we have this something called atoms. These are atoms. तो अगर हम एटम्स की बात करें, अगर इस पे एटम आ जाए तो एक मिनट के लिए मैं आपको बता दूं. Yes, this is atom, right? This is 20 by the way, but I can also use it. For example, potassium, okay, let me come, let's quickly come, these are elements. I think if it is visible to you. So lithium, and it is like, this is actually hydrogen, okay. So what hydrogen has, essentially hydrogen has one proton and one electron. This is one proton, one electron. This is simplest element, this is simplest possible element, है ना. simplest system है ये. atom का कौन सा system है, simplest system है. Almost 90% of the matter in universe, it is made up of hydrogen. For example, stars, stars में क्या है, दो proton. Actually they are coming closer. And what is proton? Hydrogen atom is basically proton, they are coming very close. And nuclear fusion reaction जो हो रही है, nuclear fusion reaction is essential for, this is kind of ये जो for example sun में जो energy produce हो रही है, that is because of nuclear fusion, and other elements are also being formed out of hydrogen. So hydrogen is very interesting, है ना. It is odorless, if we talk about hydrogen gas, it is odorless, है ना, इसमें कोई odor नहीं होती है. अगर आप देखोगे तो odorless के अलावा colorless भी है ये. colorless के अलावा क्या है, non toxic, it is not toxic basically, नॉन टॉक्सिक गैस है. अब सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है, जो कंबशन है हाइड्रोजन का, लेट मी टेल यू, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी क्लीन, है ना. इससे कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकलते, मतलब कोई ग्रीन हाउस गैस निकलती. व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न इन ऑक्सीजन, इट गिव्स यू 2H2 वाटर and twice the molecule of water if you were to basically balance it, but otherwise you can write basic equation and lots of energy. This is highly exothermic energy, है ना. exothermic reaction, exothermic reactions are those reactions which produce large amount of heat, and if when oxygen reacts with any particular substance or any compound, and if it produces energy, then it is called a combustion reaction. From high school book you must have also known calorific value. तो अगर मैं calorific value की बात करूं तो हाइड्रोजन की जो calorific value होती है, it is almost 150,000 kilojoule per kilogram. So if you burn this fuel, if you burn this hydrogen, how much you are going to get? You are going to get around 150,000 kilojoule of the heat or energy, so this is the beauty of, है ना. तो ये इसका एक बेसिक फंडा हाइड्रोजन के बारे में. बाकी आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रोजन के बारे में, फॉर एग्जांपल व्हेन these metals, some metals, they react with water, they make metallic oxide, and apart from metallic oxide, hydrogen is also produced
with pop sound, characteristic pop sound, है ना, high school. Again मैं basic NCERT की बात कर रहा हूँ. And heat is also produced in some elements. For example, let's put it here. In some elements, for example, like this potassium, sorry, sodium. सबसे अच्छा example sodium है. Sodium when reacts with water, what it does, it produce NaOH and characteristic pop sound के साथ H2 निकलेगी, साथ में heat निकलेगी. It is so much highly exothermic reaction. And similarly with potassium also. Now this is going to produce KOH, H2 gas and heat. So much heat is produced. These reactions are so much exothermic. इनमें सीधा आग लग जाती है, फायर लग जाती है. इसीलिए सोडियम एंड पोटेशियम दे आर पुट इनटू केरोसिन, राइट? यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट. फॉर एग्जांपल, अगर आप चूने के बारे में बात करो, कैल्शियम फॉर एग्जांपल, अगर हम कैल्शियम को क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, व्हाट वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, सिलेक्ट लाइम, है ना. अगेन H2 गैस, बबल्स फॉर्म होते हैं उसमें, and heat is produced, but heat is not so much that it could catch fire, है ना. तो इसीलिए जब भी चूना व्हाइट वॉश में यूज करते हैं हम, that container it gets heated up. क्यों heated up होता है? Because exothermic reaction. So this is the beauty of this hydrogen. Hydrogen easily catch fire, and that is how it is actually. Okay, so let's talk about now different types of hydrogen as I was discussing with you guys. So this hydrogen, for example, this one gray hydrogen is basically gray hydrogen जो आया है, तो मैं आपको बता देता हूं, most commonly used hydrogen which is produced today, and they are produced by steam reforming of methane, है ना. तो मीथेन की स्टीम रिफॉर्मिंग के कारण क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है. SMR भी बोलते हैं इसको, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग. समटाइम्स यू शुड नो दिस टर्म, what is S is basically steam methane रिफॉर्मिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, है ना. तो नेचुरल गैस से क्या करता है, ये बनता है ग्रे हाइड्रोजन. और अगर मैं आपको इसकी बेसिक रिएक्शन बताऊं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस CH4 व्हेन इट रिएक्ट्स विद H2O, इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, and 3 molecules of hydrogen, if you want to balance this equation. And this carbon monoxide when it reacts with H2O, what it gives you carbon dioxide and H2, right? Okay, but actually this is the basic idea. Reforming of fossil fuel simply means the hydrogen these days produced around the world, it involves steam reforming, and nickel is also used as catalyst. तो जितने जगह पे भी reforming लिखा हुआ है, nickel is used as catalyst. Sometimes they can ask you this very question. Okay, so you should understand what is nickel basically, है ना. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दिस वन, है ना. अब आपको मैं व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, फॉर एग्जांपल ब्लू हाइड्रोजन, दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, अगेन यूजिंग SMR प्रोसेस, है ना. इसमें क्या है, CO2 जो इसको ब्लू नाम दिया है ना, CO2 इज जनरेटेड, राइट. CO2 इज जनरेटेड, एंड अगर आपको याद हो CCS, कार्बन कैप्चर, व्हाट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS. तो CCS क्या है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. अच्छा, मैं आपको सीधा सीधा सरल भाषा में बता दूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इज सिंपली मींस बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट वेज हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कार्बन इज कैप्चर्ड एंड इट इज स्टोर्ड. तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा. एंड ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस यूज करते हैं. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली, इन इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट वी आर गोइंग टू in electrolysis process what we are going to use actually, hydrogen को water को पहले split करेंगे in the process. Let me tell you, let me use this pen first, this H2O, water को electricity की मदद से क्या करेंगे, तोड़ेंगे, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. दिस इज हाउ यू गेट हाइड्रोजन. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन, है तोड़ना. तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग दिस मॉलिक्यूल H2O. अब क्वेश्चन ये है कि जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, लाइक विंड पावर, like for example solar energy, then it is called green hydrogen. Simple concept. If it is not coming from, for example, if this electricity, this H2O is, we want to split this molecule H2O, and gasification is also used to split this molecule, or maybe for that matter even electricity. If coal is used, then it is called black hydrogen. For example, if nuclear energy is used, it is called pink hydrogen. Electrolysis process, again you need electricity to split H2O molecule. Turquoise, for example, pyrolysis, है ना,
Yellow hydrogen electrolysis, but you are again using solar energy for that matter, right? So these are basically color, coding, right? फ्यूल सेल क्या होता है? व्हाट इज फ्यूल सेल? फ्यूल सेल पे क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना? वन इज कॉल्ड एनोड, वन इज कॉल्ड कैथोड. इफ कैथोड इज कॉल्ड a negative terminal and anode is called positive terminal, and they have asked question in fuel cell. तो फ्यूल सेल क्या है? हाइड्रोजन रिच फ्यूल सेल में क्या होता है बेसिकली? This uses hydrogen as, H2 as fuel and oxygen. In the presence of oxygen, this hydrogen is burned, you get H2O. H2O क्या है आपका? जो निकलेगा, मतलब जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा, H2O and large amount of energy. This is how fuel cell works basically. Okay, so basic फंडा क्या है? This is kind of electrochemistry, and electrochemical reactions involve redox reactions, reduction and oxidation, है ना? तो आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का भी पता होना चाहिए. ऑक्सीडेशन की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ O2. And now you can say it is not only addition of O2 but also any electronegative or negative, electrically negative species. तो redox reactions होती है इसमें. The cell consists of two electrodes, an anode and as cathode, which is sandwiched around an electrolyte, है ना? तो हाइड्रोजन इज फेड, यहां से हाइड्रोजन गया फ्यूल के रूप में, और जो एक्सेस हाइड्रोजन था वो बाहर निकल गया. एंड यहां पर क्या हो रहा है? इसमें एक कैथोड है, एक एनोड है, और बीच में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? ये इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? आयन एक्सचेंज होंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे. तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड यू कैन पुट एनीथिंग हियर, फॉर एग्जांपल एनी रेजिस्टर्स, राइट? दिस इज हाउ इट इज. सो दिस इज द आइडिया ऑफ बेसिकली फ्यूल सेल, है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं. लेट मी टेल यू क्विकली. एंड टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स आर देयर: अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स, ACE, and proton exchange membrane electrolyzer, right? So two type of electrolyzers, if you want to go little bit further. So two types of electrolyzers are there, alkaline, AEC, alkaline electrolyzers, and this is called proton exchange membrane, PEM, EC. EC is electrolyzer, right? Just remember. Alkaline electrolyzers, they are going to use aqueous, for example, NaOH solution or maybe KOH solution, है ना? और इसमें क्या है? बेसिकली लो कॉस्ट है ना? नॉन प्रेशियस मेटल्स लाइक निकल आर यूज्ड, बट slow response to solar and wind power, low current density, that is the problem with it. Solid polymers membranes are used here. In case of proton exchange membrane, PEM is proton exchange membrane electrolyzers, they use solid polymer membranes like something is called Nafion, perfluorinated polymer is there, right? So ion transport is there. What is the pros? High current density, compact design, and what are the cons? Basically very expensive, and precious metals are used at catalyzer like platinum and iridium. That is the basic idea, right? Okay, quickly let's go to this is the basic funda. This is the basic sketch of how these gases are used. Oxygen is vented, oxygen is there, hydrogen is there, then electrolyzer stack is there, and this is the basic, but you don't need much for your UPSC examination. National Green Hydrogen Mission क्या है? It aims to build capacity and ecosystem required to position India as a global leader in clean energy, clean hydrogen energy. By 2030, we want approximately 125 gigawatts of new renewable energy capacity dedicated to green hydrogen production, है ना? तो सारा का सारा किस में जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जाएगा. 5 MMT of green hydrogen production annually by 2030, that is the mission outcome. ये मिशन है हमारा. Mission is expected to create over 6 lakh jobs, reduce fossil fuels imports by more than 1 lakh crores. That is the mission, है ना? तो ये ध्यान रखना. ओके, और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जो दो पिलर्स हैं, वन पिलर इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम, and another one is development of green hydrogen hubs. For example, these are coastal gateways, will serve as integrated center for production, consumption and future export, right? है ना? तो this is green hydrogen hubs के बारे में बात है. वर्ल्ड में there is something called World Hydrogen Summit. In 2024, India officially entered this global green hydrogen in Rotterdam, है ना? रोटरडम में क्या हुई थी? एक समिट हुई थी, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट. This is the summit. और वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली ज्वाइंड इट. सो व्हाट आर द की इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फोकस देयर? एक्सपोर्ट, पार्टनरिंग विद जर्मनी हाइड्रोजन H2 ग्लोबल टू एस्टैब्लिश मार्केट मैकेनिज्म फॉर एक्सपोर्टिंग ग्रीन H2. Standards, cooperating with the UK to harmonize global hydrogen safety and trade standards. इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या बात हुई? डेवलपिंग इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन एंड
ammonia export hub at key ports, and technology, technology transfer or collaboration में collaborating with European Union on joint proposal for hydrogen production from waste, है ना. तो India is actively building the policy, trade and infrastructure foundation to become a central global hydrogen hub. तो ये आपका बेसिक है हाइड्रोजन के बारे में. एंड लेट मी टेल यू क्विकली हिडन फ्यूचर क्या है. दे आर सेइंग दिस वर्ड, like hard to decarbonize, इंडस्ट्रीज. तो हार्ड टू डिकार्बोनाइज इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी आ गई. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, लाइक स्टील, आयरन एंड स्टील, बेसिकली दे कॉल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हार्ड टू डिकार्बोनाइज, और उसके अलावा कौन सी, केमिकल्स एंड शिपिंग एविएशन. फॉर एग्जांपल केमिकल इंडस्ट्री, है ना, शिपिंग, ठीक है, केमिकल, शिपिंग एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. यहां पर बिना उसके हो ही नहीं सकता है, मतलब आई मीन कार्बन, कार्बन इंटेंसिव, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड हियर and they are so called hard to decarbonize industries, right? And so let me tell you how the future is going to be. So crude petroleum is kind of a mixture. It is a mixture of hydrocarbons. We have talked in earlier video also, and it is called black gold also, right? So what is happening, it is basically in fractional distillation. It is heated up and it produced, for example, kerosene, petrol and gasoline, so and so forth, so these are petrochemical feedstock के लिए crude oil की जरूरत पड़ती है. अब now what is the scenario, as electric vehicles are rising, surplus petrol and diesel will grow even while global plastic demand continue to increase. Plastic demands, plastic पे भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो please go through that also. Refineries are going to use medium chain fuel into shorter chains requiring large amount of extra hydrogen. तो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है ना. Using precious green hydrogen to make plastic instead of decarbonizing steel, cement, even cement industry is also hard to decarbonize, है ना. And fertilizers, just don't forget about it. Fertilizers is an unfortunate trade-off. Green hydrogen will remain cheaper than blue or green hydrogen until around 2050, है ना. तो अभी 2050 तक कम से कम जो और है ब्लू ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ग्रीन हाइड्रोजन is going to be costlier for the time being, so they are using this one, gray and blue hydrogen, right? For green hydrogen to scale and become affordable, the petrochemical industry, its largest consumer, most adopt it. Petrochemical industry should adopt it, right? What? Green hydrogen. तो green hydrogen क्या है, future है, खासकर जब हम climate change के बारे में बात करते हैं, है ना. When we talk about climate change, we want to contain, global warming. So green hydrogen is going to be future, right? So we are going to wind up this video, but before that, you must be asking this question. And let me not answer directly these questions, but let me tell you, how you are going to solve these questions. This question says, this was asked in preliminary examination, with reference to green hydrogen, consider the following. It can be used directly as fuel for internal combustion engine, sometimes called ICE, internal combustion engine. It can be blended with natural gas and used as fuel for heat or power generation. I am just going to give you some hint. Something is called HCNG, है ना. तो इसके बारे में एक बार देख लेना. Fuel cell I have talked up to you. There is hydrogen ICE technology, hydrogen internal ICE technology was there, some companies are doing, like Toyota, BMW, if you have gone through BMW S7 or hydrogen 7, S7 or hydrogen 7, Toyota Corolla S2 concept, Cummins hydrogen IC heavy duty engines, Indian Oil and Ashok Leyland is also talking about all those things. So you are going to answer this question in your comment box. Another question, again the same question, green hydrogen is expected to play significant role in decarbonizing how many of the above industries, okay? So there are industries called hard to decarbonize. तो यूपीएससी के लिए भाई ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. You guys should go through newspaper. I picked up this, this topic from newspaper only, and then you must be getting into details, history, and so on and so forth. One question for your mains answer writing, and this question says, green hydrogen is increasingly being seen as cornerstone of future clean energy systems. Discuss the science behind green hydrogen production. How does it differ from gray and blue hydrogen? Also highlight the key opportunities and challenges for India in adopting green hydrogen at a scale. Please write down this question, not देखो